Good morning, student. Today I will discuss about scalar and vector, and this is my sixth lecture. Okay, in that scalar vector, I will represent a new important topic. Okay, that topic which is called analytic method of vector addition. What? Analytic method of vector addition. This is called analytic method of vector addition. Already I have discussed about graphical method of vector addition. In that graphical method of vector addition, already I have told that many properties like two vectors are acting simultaneously in same direction, then the resultant vector also moves in that direction, and also we have to calculate their magnitude. Clear? Second thing is, if two vector acting in opposite direction, then also we have to calculate the resultant vector, and that resultant vector which is notified along a particular direction where the bigger vector which will be directed in a particular direction. Clear? Third thing is, if two vector acting simultaneously by create an angle setting value, that is theta, at that case we have to calculate another law, that is called triangle law of vector addition. After that, I'll discuss about parallelogram law of vector addition, and last thing is polygon law of vector addition. Clear? Here, in that given triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition, I have explained about their definitions by using diagrams only. That is called graphical representation of vector addition. Clear? Now, in that topic, I will discuss about analytic method of vector addition. Here, in that analytic method of vector addition, we have to calculate it two laws of vector addition, and also we have to calculate their direction as well as magnitudes. Okay? In by using mathematical expression. Okay, so that my first property is known as triangle law of vector addition. So, you know what is the definition of triangle law of vector addition? Already I have discussed that one. So, what do you mean by triangle law of vector addition? Triangle law of vector addition tells us, or it states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented by magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in same order, then the resultant vector represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. By using that definition, okay, by using that definition, we represent a diagram. How to represent a diagram? Now look at that blackboard. So, it states that, what is the definition of triangle of vector addition? It states that two vectors acting on a particle at the same time are represented by the magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in same order. If you imagine that so this is the vector A vector. Clear? Clear? Two vectors acting on a particle at the same time. Suppose this is vector B and two vectors acting on a particle at the same time. Clear? And by creating an angle theta, केते angle create करछन्ती? Theta angle create करछन्ती. Clear play? At the same time. Here this is the vector A and this is the vector B. Both are create an angle theta at the same time. तुम मन में डाउट आस सर एटा केमिति पॉसिबल हैला?
तो मु कौन कली गोटे वेक्टर को एक्सटेंडेड करेली तो ए वेक्टर को मु कौन कली एक्सटेंड कली जेहेतु मु आको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देबी तेणु मु कौन कली ए वेक्टर को एक्सप्रेस कली बा एक्सटेंडेड करे गोटे पार्टिकुलर डायरेक्शन रे आ डायरेक्शन रे कोडे ए डायरेक्शन रे सिमिलरली से गोटे पॉइंट रो मु कौन कली वेक्टर बी को ओरिजिनेट करेली तो ए दीटा वेक्टर साइमल्टेनियसली ओरिजिनेट हेले गोटे पॉइंट आमे भाबी नबा से माने कौन कले क्रिएट कले थीटा एंगल क्लियर तो according to that definition two vector acting on a particle at the same time acting हेले they are represented by the magnitude and direction से मानकर किछ लेंथ रहिला आउ से माने गोटे डायरेक्शन रे नोटिफाई हेले ओके by the two side of the triangle आमे जदि धरनबा ए ट्रायंगल डबली ए ट्रायंगल रो दीटा साइड को आमे धरनबा दीटा साइड्स by the two side of the triangle आमे ट्रायंगल जनरेट करिबा and they are represented as the same order r head को r tail okay head it so head tail means that is there in same order clear now the resultant vector represented in magnitude and direction resultant vector को हम धरनबा से resultant vector कोन थियो magnitude and direction थिबो by the third side of the triangle कोन करथो गोटे ट्रायंगल एटा छ ओपन ट्रायंगल बोले भाबी नबा आकु ये कोन कला ओपन ट्रायंगल को क्लोज कला कोई सर क्लोज कला पहले देखो so this is the resultant vector and that resultant vector which is in that direction clear so the resultant vector represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. So opposite order मु बार बार कहथि जदि गुटे वेक्टर resultant vector तार इनिशियल पॉइंट बा टेल पॉइंट्स जदि फर्स्ट वेक्टर सहित फर्स्ट वेक्टर रो इनिशियल पॉइंट बा टेल पॉइंट को कनेक्ट करे बा लास्ट वेक्टर रो हेड पॉइंट सहित रिजल्टेंट वेक्टर हेड पॉइंट जदि कनेक्शन भी ताहले आमे भाबी नबा जे से वेक्टर टा अपोजिट डायरेक्शन रे गति करूछि तो देखुनो ए दीटा जाको सेम डायरेक्शन जाउछन ये कोन हला अपोजिट डायरेक्शन जाउछन हला क्लियर सो दिस इज द डेफिनेशन ओके सो आको आमे केमि थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करिबा तो आमे कोन भाबे एक्सप्लेन करिबा तो नबा लेट अस कंसीडर टू वेक्टर क्लियर नाउ आई विल राइट दैट थिंग क्लियर सो आको दे देबा ना O P Q क्लियर लिखिबा एक्सप्लेन्स लिखिबा let us consider two vector let us consider two vector A vector and B vector acting along what OP direction and PQ direction clear and they are represented by magnitude and direction and they are represented by magnitude and direction also acting in same direction or same order clear both the vector देखिए what both the vector which one a vector and b vector a vector and b vector creates an angle theta clear
Clear पिले? Then the resultant vector which one? That is r vector which is acting along opposite direction of the triangle OPQ. Triangle OPQ, comma, taken in opposite order. Okay, taken in opposite direction. Okay, opposite direction लिखि परिबा OQ vector of the triangle OPQ. This is acting along opposite direction OQ vector of the triangle OPQ. Clear? Okay, Pile? And that resultant vector clear? And that resultant vector create an angle beta or alpha, angle alpha to the given A vector. Clear? That shows its direction. That alpha vector, alpha angle alpha shows its direction. Clear, clear? Clear? So again I repeat that thing. Let us consider two vector, A vector and B vector, acting along OP vector and PQ vector. They are represented by magnitude as well as direction, also acting in same order. Both the vector A vector and B vector create an angle theta, and they are acting simultaneously at a point in same time. Clear? According to that definition, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି. କ୍ଲିୟର? ଆମେ ଭାବି ନେବା କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ କରିଦେଇଛି ଏ ଭେକ୍ଟରକୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବା according to that definition. Clear? And that resultant vector r vector which is acting in opposite direction, okay, of the triangle କ'ଣ OPQ triangle रे r vector ଟା कोड जाउची opposite direction जाउची, को direction रे OQ direction रे, direction OQ of the triangle OPQ, and that resultant vector create an angle what, that is alpha to the given A vector. को vector से तो A vector से तो create करची alpha angle रे rotation करिकी resultant vector टा जाउची opposite direction. That alpha shows its direction. Clear? आमे alpha को शो करेबा जे ये तार direction. तो प्रथमे आमे कोन करिबा, तार प्रथमे मैग्नीट्यूड काढिबा, रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड काढिबा, तापरे तार डायरेक्शन को नोटिफाई करिबा, जो द्वारा कि आमे तार एक्सप्रेशन दबा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दबा, ताको कहबा एनालिटिक मेथड. पूर्व आमे ग्राफिकल मेथड रे खाली डेफिनेशन जानथिले, एबे आमे कोन करिबा एनालिटिक मेथड जेहेतु पढुचे आमे तार डायरेक्शन एज वेल एज तार मैग्नीट्यूड काढिबा. क्लियर पिले? Please note it.
Now I will erase that definition. Clear? Because I will solve that thing. Okay. First of all, I have to calculate its magnitude. After that, I have to calculate its direction. So that I will erase that definition. Clear? Please note it. Now I have to calculate its magnitudes. So here you write magnitude of resultant r vector or r vector. Magnitude of r vector or magnitude of resultant vector r. Clear? So whenever we calculate magnitude of resultant vector r vector, first of all, in above diagram, we have to draw a perpendicular line. Okay, we have draw a perpendicular line from Q point upon the extended OP or extended A vector. Okay, so it is a perpendicular line from point Q to upon extended OP, and it is represented by a alphabetic order that is called L. Clear? And that angle behaves as a triangle. Okay, here you write draw a line from Q upon OP, from Q upon extended OP vector at point N. क्लियर पिले आमे कौन कले गोटे Q पॉइंट रु आमे कौन कले गोटे लंब को अंकन कले कहा ऊपर ए OP एक्सटेंडेड वेक्टर रो ऊपर को पॉइंट रे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ताकू ना देले N. So here you write draw a line from Q upon extended OP, not OP, that is extended वर्धित OP को point रे at point N. Clear? So that in right angle triangle or in triangle QNP, चिंता करो ए जो ट्रायंगल रे एटा जदि थीटा हुए एटा केते पिले एटा बी वेक्टर पिले एटा होछि केते ए वेक्टर. क्लियर? एटा जानि से बी वेक्टर एटा होछि थीटा हमु दरकार ए बाहु इन जानिबा को साइन व्यवहार करिबा हमें कैलकुलेट करिबा pn कैलकुलेट करिबा qn को कैलकुलेट करिबा हेले जाय कि हमें गोटे रिजल्टेंट वेक्टर पाइबा तार मैग्नीट्यूड पाइबा एज वेल एज डायरेक्शन पाइबा. तो प्रथमे हमें pn को कैलकुलेट करिबा. pn कैलकुलेट पई हमें को साइन व्यवहार करिबा cos ना sin. हमको जणा अछि b वेक्टर थीटा जणा अछि ताले हमें कोन पाइबा हमें जानचे in triangle QNP cos theta which is equal to what? Base by hypotenuse. हमें जानचे that is a right angle triangle according to Pythagoras theorem. What? Cos theta equal to कौन पिले? Cos theta equal to b by h. So b means what? This is pn, that is pn. b means base. Hypotenuse माने कौन? This is the hypotenuse corner. Okay, sorry, hypotenuse. Okay, so कौन होगा? That is PQ. That means हम कौन दरकार PN दरकार. That implies PN equal to what will happen? PN equal to PQ cos theta. PQ cos theta. That implies PN equal to PQ माने कहते पहले B vector cos theta. Clear?
आमे एति जान देले केते b वेक्टर cos थीटा और b cos थीटा रे आमे रिप्रेजेंट करि परिबा ओके वेक्टर चिन्ह दबानी जेहेतु आमे cos थीटा रे करूचे तेनु ये मैग्नीट्यूड फॉर्म रे आसीबो क्लियर पिले सो b cos थीटा दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सिमिलरली आमे कोन दरकार qn दरकार सो qn पय आमे कोन करिबा sin थीटा यूज करिबा सो sin थीटा इक्वल टू कोन हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सो p by h क्लियर परपेंडिकुलर माने कोन पिले qn by hypotenuse कोन पिले pq that implies qn equal कोन हो pq sin theta कोन हो pq sin theta so pq sin theta माने केते पिले that means qn equal to pq means b sin theta पिले b सहित किछि वैल्यू एंगल कंसीडर कराई छै तेनो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म रे लिखा जिवा को वेक्टर फॉर्म रे हम लिखिबा नाही सो इक्वेशन नंबर 2 सो आमे जान देले pn रो वैल्यू केते b cos थीटा सॉरी pn रो वैल्यू केते b cos थीटा एंड qn रो वैल्यू हला b sin थीटा क्लियर पिले क्लियर that is equation number 2 now here Pile, look at the diagram so you know a bigger triangle is here what is the bigger triangle that is qno qno is a bigger triangle why use that type of triangle because we have to calculate the resultant vector whose magnitude so that we consider that bigger triangle clear so in bigger triangle qno in right angle triangle that is the right angle triangle symbol qno okay we have what कोन पिले देखो this is base this is perpendicular this is hypotenuse in bigger triangle if you use that triangle not that triangle we have used that triangle bigger triangle clear in bigger triangle qno because we have to calculate the magnitude of r vector how to calculate magnitude of r vector you know Pythagoras theorem what is the value what is Pythagoras theorem तो Pythagoras theorem जो कोन पाइबे हमें रिजल्टेंट जेहेतु कैलकुलेट करिबा तो कोन हिसाब रे कैलकुलेट करिबा सो r ओके oq vector रो mode which is equal to कोन पिले square root of that means हमें जानि Pythagoras theorem कोन होची h equal to कोन हबो p रो स्क्वायर प्लस b रो square root okay similarly h बदल कोन नबा r vector माने कोन oq vector रो mode that is magnitude so कोन हो पिले o to n that is on vector रो mode रो square plus कोन हबो qn vector रो mode रो square so oq vector माने कोन पिले that is r vector रो mode that is the magnitude बा आमे simply r लिख परिबा that is r बोल लिख परिबा बा एमिति लिख परिबा clear on रो vector माने कोन पिले on means कोन op plus pn so op vector plus pn vector रो कोन पिले होल स्क्वायर बा लिखि परिबा op plus pn मैग्नीट्यूड उठे दो डायरेक्ट वेक्टर उठे दोछ op plus pn मिसले कोन आसीबो on आसीबो रो होल स्क्वायर प्लस कोन पिले qn रो होल स्क्वायर मु मैग कोन वेक्टर को उठे देली दैट्स द मैग्नीट्यूड जेहेतु अछि मॉडुलस जेहेतु अछि वेक्टर रो मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड क्लियर सो देयर स्क्वायर रूट्स क्लियर सो op माने कोन पिले दैट इज a जेहेतु हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखले तो op माने हम लिखि परिबा a वेक्टर न लिखि कोन लिखिबा a लिखिबा काई a वेक्टर रो मोड तेनो a हबो तो लिखि परिबा कोन हबो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट a
plus what? That is b cos theta रो whole square plus qn माने कौन b sin theta रो whole square. Clear play? Please note it. Then I will erase that one. Now देखो पहले कौन होगा. So that r vector r equal to what will happen? R equal to कौन आसला a plus b रो whole square. That means a plus b cos theta रो whole square. That means हम जब a plus b रो सूत्र पके a plus b रो whole square रो सूत्र पके आता है तो कौन होची डी a square plus b cos theta रो whole square plus 2 into a into b cos theta. भाबिनियो a is small a, b is b cos theta is b. That means a plus b रो whole square. क्लियर ताना आमे a plus b रो whole square रे रिप्रेजेंट करेले. तो कौन आसला तुम जानिचो 10th क्लास रे a square plus b square plus 2ab. That means b square माने केते b cos theta रो whole square. Square root plus which one is that? That is b sin theta रो whole square. So again I write that thing. What? That means a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta. Clear play? Now a square plus देखो पहले एटी बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा আছে एटी बी बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा আছে सॉरी एटी बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा আছে एटी আছে बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मु कोन कली बी स्क्वायर कॉमन काट देली कोन लिख देली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा क्लियर रो स्क्वायर रूट. क्लियर तो जत लिखि देली तो मत कह तुम जान त्रिकोणमिति सूत्र दैट इज ट्राइगोनोमेट्री सूत्र कौन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा केते 1. सो हियर यू राइट दैट थिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो हमें लिखि दा पहले सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल केते 1. ओके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा केते 1. सो ए जगह केते पके दबा 1 पके दबा तो कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर. ओके सो हमें जान देले मैग्नीट्यूड केते आसिला ओडे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रो जो रिजल्टेंट पाइले से रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड केते r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा सबोळो हमरो स्क्वायर रूट सबोळो पय मन रखो केते आसला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रो स्क्वायर रूट. ओके मैग्नीट्यूड केते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो स्क्वायर रूट. ओके दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड. एबे हम कोन काढिया पिले डायरेक्शन काढिबा. हाउ टू कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन. मु पूर्वरु कहिथिली अल्फा को हम सुचेबा जे डायरेक्शन बोली कौन जो सुचेबा डायरेक्शन. ए जो रिजल्टेंट वेक्टर केते एंगल डायरेक्टेड हे कि ए वेक्टर केते एंगल डायरेक्टेड हे कि जाउची अल्फा एंगल जाउची. तेणु आमे कोन काढिबा अल्फा काढिबा. अल्फा जदि काढ दवा ताहले हम कोन पाइबा तारो डायरेक्शन पाइजबा. तेणु अल्फा काढिया पे आमे कोन यूज करिबा को साइन व्यवहार करिबा ताहले जाई कि हम कोन मिलिबो डायरेक्शन मिलिबो. कहलो पिले so please write down. Then we have to calculate the direction of given vector. So here you write direction of r vector. Clear? So let the resultant r vector, here you write, let the
resultant R vector makes an angle alpha to the given vector A vector, makes an angle alpha to the given A vector. Clear फिले? तो ये जो डायरेक्शन जो कैलकुलेट करूचे ए डायरेक्शन रे थिबा R vector कोन करूची केते एंगल रे A vector दूरी जाउची अल्फा एंगल रे. So that shows its direction. So जेतेबेले हमें अल्फा कैलकुलेट करिबा को हिसाब रे कैलकुलेट करिबा अल्फा सम्मुखीन किए अछि पिले b sin थीटा अल्फा रो साइड रे किए अछि पिले दिस वन a plus b cos theta. Clear? So whenever we calculate its direction, so that we have used tan theta. Okay, so that means tan alpha equal to what? Perpendicular by base. Perpendicular by base. So perpendicular means what? B sin theta divided by base कहते पिले और हम लिख पाएगा P means what? Qn divided by what? On. Clear? That means which is equal Qn मैंने कौन B sin theta divided by On means what? OP plus Pn. Clear? That means B sin theta divided by OP माने कहते हैं A plus Pn माने कहते हैं B cos theta. Clear? So tan alpha which is equal to B sin theta divided by A plus B cos theta. Now that implies alpha equal to tan inverse of what? B sin theta divided by A plus B cos theta. So this is the direction of resultant vector, that is alpha equal to tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta. Finally, we got the answer, that is resultant vector whose magnitude as well as direction. So the resultant vector R vector whose magnitude is square root of A square plus B square plus 2AB cos theta, and its direction alpha which is equal to tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta. Okay. So this is the first long question in scalar vector. Okay, triangle law vectors, and this is called analytic method. Okay, please student, if any doubt then ask me. ले दया करी जदि डाउट अच्छे ताले पचार किसी डरिवार नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो पिलाणों सहित. ओके, थैंक यू.